Hello guys, welcome back to the channel. And in this particular video, हम discuss करने वाले questions that was asked in Nissan Digital. So we have basically three questions. The first question is we need to check if two strings are anagram or not. We have already discussed this question in our channel. Also हम उसको brief discuss कर लेंगे यहाँ पे छोटा सा code है इसका भी. So the second question we have is to check the palindrome in the most efficient way. तो ये भी क्वेश्चन है. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज बेसिकली काइंड ऑफ एडॉक टाइप ऑफ क्वेश्चन. हमको थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन करना है. To give you a brief summary about it is like a stack based questioning. So we'll see this question at the third time. Okay. Start with the first question. So write a code to check if two strings are anagram or not. So basically what is anagram? So anagram is basically a string जिसको आप कहीं से ही पढ़ो, like not that. So suppose I'll show you an example. Suppose I'll make a string s and suppose cat, right? And I'll make another string, suppose t equals to a tag, right? So can I make string s from string t, right? Because basically जो ना तो जो कैरेक्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी है इन स्ट्रिंग एस एंड इन स्ट्रिंग टी, दे बोथ आर इक्वल. So if we reshuffle the string t, we can actually get cat, right? So this is called as anagram of a string. So the simplest and the easiest way to find a string is anagram or not is basically दोनों string को sort कर दो. So we'll sort this string as क्या बनेगा अपने पास act, right? सिमिलरली अगर मैं टी स्ट्रिंग को सॉर्ट कर देता हूं तो क्या बनेगा एसीटी. नाउ जब हम दोनों को सॉर्ट कर लेंगे आफ्टरवर्ड्स वी विल चेक क्या हमारे स्ट्रिंग एस और स्ट्रिंग टी की जो वैल्यू है इज दिस सेम. इफ दैट आर सेम मतलब हमारे स्ट्रिंग एनाग्राम है. इफ इट इज नॉट देन इट्स नॉट एन एनाग्राम. सिंपल सॉल्यूशन. ओके. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, एज पर द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन निसान डिजिटल, थोड़ा स्ट्रिंग्स के ऊपर जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर ज्यादा फोकस है. तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट निजाम डिजिटल इंटरव्यू, जस्ट prepare the string concepts in a with some more effort. Okay. So start with the implementation. Use sort function present in algorithm.h header file dot s dot begin s dot enter begin s dot, right? So this will sort our string s. Similarly we need to sort the string t. तो t dot begin से लेके t dot end तक हम इसको sort कर लेंगे. Now क्या चेक करेंगे हम? If s equals to t, मतलब अगर हमारे string के लिए equal है तो we will simply print this thing. Okay, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है. So simply print c out yes. Basically anagram के लिए कुछ प्रिंट कर सकते हो आप. So I'm printing as yes, else c out no. बहुत ही सिंपल कोड है. एंड बेसिकली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड जस्ट टू मेक द कैंडिडेट कंफर्टेबल. दैट्स इट. मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन में तो कुछ खास दम नहीं है, बट जस्ट कि कैंडिडेट जो है कंफर्टेबल हो इन द इंटरव्यू. तो टू मेक द कैंडिडेट कंफर्टेबल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द इंटरव्यूज. तो कोड रन करते हैं एंड एज पर एक्सपेक्टेशन द आंसर शुड बी यस. ओके एंड हियर वी गो. You can see the output is yes. We'll try a negative case. Suppose if I'll print CAS, just add some random characters in the string S. Now if it's sort, it should print no. As expected, it is no, right? Also, थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम कि we can also add a condition before sorting. अगर हम चेक कर ले कि हमारी string s की जो लेंथ है इट इज नॉट इक्वल्स टू t डॉट लेंथ, यहां से हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं. वी विल सिंपली प्रिंट नो एंड रिटर्न 0.
तो एडिंग दिस चेक विल ऑप्टिमाइज द कोड अ बिट, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, कुछ मिली सेकंड्स का डिफरेंस आएगा, दैट्स इट. So this is also one of the small optimization you can do in your code. That's it. तो आप जस्ट कर लेते हैं. Okay. हालांकि इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 10 मिली सेकेंड्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन दिस काइंड ऑफ कोड्स. 10 मिली सेकेंड्स, ओके, नॉट 10 सेकेंड, मिली सेकेंड्स. So this was all about the question one. Moving on to the second question: how to check a string is palindrome in most efficient way. So before move, I'll just comment this code. Okay, and so second question is we need to check a string is palindrome or not. So a palindrome string is a string जिसको आप आगे से पढ़ो या फिर पीछे से पढ़ो का सेम ही मीनिंग होता है. I tell you, suppose if I write a word, suppose naman. तो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो, that is NAMN, that is also naman. But if you read from the end also, it is also NAMN. So no matter the way you read the string, it's always naman. So इसको बोलते हैं palindrome string. Now there are multiple approaches to find a string is palindrome or not. First is two pointer approach. I'll tell you the approach. Okay, समझ लेते हैं हम. We'll go with the one approach, the easiest approach. Okay, first approach is the two pointers approach. इसके अंदर हम दो पॉइंटर बनाएंगे. सपोज i0 और j नाम से पॉइंटर जो स्ट्रिंग की लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा. तो 0 1 2 3 4, दैट्स इट. तो हम हर आइटरेशन में चेक करेंगे कि i और j की वैल्यू इक्वल है कि नहीं है. तो हमारा i यहाँ पे पॉइंट कर रहा है अभी n पे और j पॉइंट कर रहा है इसको. अगर एट एनी एंड विल रन अ लूप अंटिल i इज लेस देन j, एंड एट एनी मोमेंट व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, दैट मींस a string is not palindrome. सिंपल. अगर आप चेक करोगे पहले हम i के लिए भी n है और j के लिए भी n है, तो अब दोनों के लिए सेम है, तो विल इंक्रीमेंट i by 1, i प्लस प्लस एंड j by 1, तो j माइनस माइनस. आफ्टर दैट i will point to a, so a, and j will point to this a, right? Similarly this way will go. तो अब जैसे i और j की वैल्यू बराबर होगी तो हम ब्रेक कर देंगे लूप. So this is the one way we can check if a string is palindrome or not. Going on to the second way to check it is, that is, we'll make another string s. Suppose नहीं, हम क्या करेंगे, string s को एक दूसरी string में स्टोर कर लेंगे. Suppose तीन आपसे string बनाता हूँ, उसके अंदर मैं s स्टोर कर लेता हूँ. Now I'll reverse the string s. So suppose अगर से I'll give another example. तो s के अंदर हमारे होता है, s के अंदर वैल्यू है 1 2 3. नाउ अब s को रिवर्स कर दूंगा मैं, तो s के अंदर अब क्या आ जाएगी 3 2 1. तो हम चेक कर लेंगे अगर वो इस s1 और s और t के लिए बराबर है कि नहीं है. एंड इफ t एंड s इज नॉट इक्वल, दैट मींस द स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम. So this is the solution, and I think both of them are optimized solution. So I think we should go for this वाला second वाला approach. We'll go with that. तो जल्दी से कोड करते हैं इसके लिए. Control X. Yeah, here we'll start. String S हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको हम चेक करना है कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है. Also I'll make another string. Suppose T, इसके अंदर हम स्टोर कर लेंगे S की वैल्यू. Right? Now there is the function in C reverse नाम से जो कि हमारे स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा. Right? We can also do it manually using a for loop, but we have a function, so we'll use that one. So that is S dot begin से start होगा and it will go till S dot end. Sorry. And yeah, and now we'll again check कि अगर मेरे s की वैल्यू बराबर होती t के, that means t out palindrome. वरना else t out not palindrome. सिंपल. तो टेस्ट करते हैं कोड को. तो रन हो रहा है and here you can say the string is palindrome. I'll try to modify the string as by adding some
noise into the data, suppose 1 2 3. तो नाउ अब स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम राइट, बिकॉज अब अगर स्टेटिंग को आप पीछे से पढ़ोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी 3 2 1 एन नमन राइट, एंड अगर स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो क्या हो रहा है नमन 1 2 3। तो एज हम स्टार्टिंग से और एंड से हम पढ़ने से दो अलग अलग स्ट्रिंग्स आ रही, दैट मीन्स इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग एंड हेंस वी कैन सी द आउटपुट इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हल्का सा बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग, मतलब इतना नहीं है बट ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा एडॉक टाइप क्वेश्चन है, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो जस्ट बी विथ मी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो विद द डेफिनेशन, द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। You are keeping a score of a baseball game with strange rules. At the beginning of the game, you start with an empty score. You are given a list of string operations where operation I is the ith operation you must apply to the record in the following: an integer x, record a new score to x, प्लस मतलब कोई स्कोर x नाम वैल्यू आएगा तो उसको हमको हमारे स्कोर बोर्ड के अंदर ऐड करना है। जब हम प्लस करेंगे तो रिकॉर्ड न्यू स्कोर दैट इज द सम ऑफ प्रीवियस टू स्कोर्स। ओके, तो हम लास्ट के दो स्कोर्स को पॉप करना है, वी टू ऐड दैट स्कोर राइट। उसके बाद डी, डी मीन्स रिकॉर्ड न्यू स्कोर दैट इज द डबल ऑफ प्रीवियस स्कोर, सिंपल। एंड सी, invalidate the previous score, remove it from the scoreboard, simple। Return all the sum of the score of the ground of the record after applying the operation। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। इनिशियली हमारे सपोज इनपुट के अंदर ही है राइट, तो पहले आएगा हमारे पास 5, तो 5 है सिंपल, यानी क्या है इंटीजर एक्स, उसको हम रिकॉर्ड न्यू स्कोर, तो हमने स्कोर बोर्ड में ऐड कर दिया 5, दिस इज स्कोर बोर्ड। ओके, तो रहता है 2, तो 2 इज ऑल्सो इंटीजर, विल जस्ट ऐड इन टू द रिकॉर्ड बोर्ड 2। उसका जाता है सी, सी का मतलब क्या था, रिमूव द लास्ट स्कोर, तो हमने लास्ट एडिट स्कोर क्या था 2, उसको हटा दिया हमने, सिंपल। उसका जाता है डी, रिकॉर्ड द न्यू स्कोर दैट इज डबल ऑफ द प्रीवियस स्कोर, तो जब हमने ये आया तो हमारा लास्ट स्कोर क्या था 5 राइट, तो 5 इंटू 2 10, तो हम 10 को स्टोर कर लिया हमारे स्कोर बोर्ड के अंदर। आफ्टर दैट इट इज प्लस, तो व्हाट डज प्लस प्लस सेज, रिकॉर्ड अ न्यू स्कोर दैट इज द सम ऑफ प्रीवियस टू स्कोर्स, तो हमारे लास्ट के दो स्कोर क्या है 10 और 5, तो विल add 10 plus 5 that is 15 and we will add the new value 15 to our record, that's it। and जब हमारा खत्म हो गया string, then we need to return the sum of the scoreboard, so 15 plus 10 25, 25 plus 5 30, सिंपल। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग स्टैक। तो स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो कि FIFO टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट हमने पहले इंसर्ट किया है उसी को हम पहले पॉप आउट करेंगे। तो फॉर दैट विल मेक अ स्टैक ऑफ int limit as st, okay। और also can do what we can do, यहाँ पे आओ, copy this, okay, control oh shit, so we made a string array of size 5, ठीक है। now एक second, what is this, move just perfect, so these are the operations। so what we'll do, we'll use the for loop for die equals 0 semicolon I less than the size 0 1 2 3 4, so 5 semicolon I plus plus, बेसिकली फोर लूप ले रहे हैं और हम इस एरे में ट्रेवर्स कर रहे हैं। नाउ अगर
ऑपरेशंस ऑफ ith इंडेक्स बराबर होता है किसके, सी के, तो व्हाट वी आर डूइंग, मूव इट फ्रॉम द रिकॉर्ड, तो हमको टैग के अंदर कोई टॉप एलिमेंट है उसको हटा देंगे, तो st डॉट टॉप, सिंपल। नाउ एल्स इफ ऑपरेशंस का ith इंडेक्स अगर इसकी वैल्यू बराबर हो जाती है अपने डी के, तो डी के अंदर क्या करना है हमको, रिकॉर्ड एंड न्यू स्कोर दैट इज डबल ऑफ द प्रीवियस स्कोर, तो लास्ट का स्कोर उठाएंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, उसको ऐड कर देंगे स्ट्रिंग में, ओके, इट इज इक्वल्स टू डी, तो एक्स इज इक्वल्स टू स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उसको उठाया हमने, ठीक है, तो हमने क्या किया है, हाँ 5 को उठाया हमने, उसको डबल करना है, तो स्टैक डॉट पुश पुश व्हाट, एक्स इनटू 2, दैट्स इट, बस। अब डी भी हो गया, डी भी हो गया, अब आया प्लस का साइन, copy this, okay, just for a better sake of an operation, okay. If it is plus, then what we are supposed to do, we need to record a new score that is the sum of previous two scores, तो हमको पहले दो स्कोर निकालने पड़ेंगे, x इक्वल टू स्टैक डॉट टॉप, और फिर स्टैक डॉट पॉप करेंगे हम, सेमीकोलन, उसके बाद एक y इज इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप टॉप, आई टेल यू, लेट मी राइट द कोड, ठीक है, हमने क्या किया, स्टैक का टॉप एलिमेंट उठाया हमने, हमको क्या करना है, प्लस का साइन आएगा, देखो आई विल शो यू, व्हेन इट इज अ प्लस साइन वी नीड टू एट द सम ऑफ प्रीवियस टू स्कोर्स, तो यहाँ पे प्रीवियस टू स्कोर्स क्या है, 10 और 5, तो हम पहले 10 को निकालेंगे एक वेरिएबल के अंदर, देन विल रिमूव इट, देन विल गेट 5, अब हम 5 प्लस 10 को ऐड करके स्टैक के अंदर वापस पुश कर देंगे, तो राइट, नाउ स्टैक के अंदर हम पहले क्या पुश कर रहे हैं, जो हमने ये एलिमेंट रिमूव किया, राइट, एक्स, तो स्टैक के अंदर पहले एक्स पुश किया, उसके बाद स्टैक के अंदर पुश कर देंगे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, सिंपल एंड रिटर्न, और एल्स हमको कुछ नहीं करना है, स्टैक के अंदर पुश ही करना है, राइट, अगर कोई इंटीजर आता है वी जस्ट नीड टू पुश इनटू स्टैक, st डॉट पुश, ओके, what was the number, फंक्शन यार, स्ट्रिंग टू इन नाम से फंक्शन होता था, stoi, not sure about that, I have to check it, string to int and we need to push the 5, so this function called as stoi, string to int, and यहाँ पे हम पास कर देंगे ऑपरेशंस का ith index, सेमीकोलन, that's it. Now simple while loop will traverse our stack while stack dot empty नहीं होता है जब तक, राइट, तब तक वो हमारे स्टैक के अंदर ट्रेवर्स करना है, stack is not empty, okay, answer is equals to stack dot top column, we'll make a variable answer equals to 0, okay, plus equals to, afterwards stack dot pop, and here we go, simply see out, answer is semicolon,
Perfect. So for this particular output, the output should be 30. Input, the output should be 30. So आंसर इज 30. परफेक्ट. तो ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता हूँ वापस हो क्या है एक्चुअली. यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग एरे है. हम वी आर ट्रेवर्सिंग द स्ट्रिंग एरे. हम चेक करें अगर वो सी है, मतलब उस जो स्टैक के टॉप का एलिमेंट है उसको रिमूव करना है. तो वी कैन यूज द स्टैक डॉट पॉप फंक्शन टू रिमूव द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक. आफ्टरवर्ड्स हम चेक करते हैं इफ द ऑपरेशन इज डी. डी मीन्स वी टू डबल द एलिमेंट विच इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक. तो हमने स्टैक के टॉप में से एलिमेंट निकाला, उसको डबल करके पुश कर दिया स्टैक के अंदर. सिंपल. फिर आता है प्लस का साइन. तो प्लस में क्या करना है हमको? वी हैव टू ऐड द सम ऑफ टू प्रीवियस रिकॉर्ड्स, टू प्रीवियस कोर्स. तो हमने स्टैक के टॉप से पहले एलिमेंट निकाला, फिर उसको पॉप कर दिया, देन वी एडेड, वी गॉट सम अनदर वैल्यू दैट इज स्टैक का जो सेकंड एलिमेंट है उसका हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया जो हमने वैल्यू डिलीट की थी, एंड वी जस्ट एडेड द स्कोर ऑफ प्रीवियस टू स्कोर्स. एंड आफ्टरवर्ड्स, और मान लीजिए कुछ भी नहीं होता है तो वी विल जस्ट ऐड द स्कोर टू द स्टैक. And there is a function called as stoi in CPP, in based to be precise in string. Stoi is a function that is used to convert string to int, right? You can here see the implementation of it. And yeah, और जब हमारा ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, like this loop is finished, afterward we'll just traverse our stack until our stack is not empty. We will just pop the element one by one and add the records to an answer variable. That's it. And जो हो रहा है afterwards we'll print it. Simple. So this was basically 3 questions that was asked in Nissan Digital. I hope you got the questions and the solution for that. I'll be attaching the solutions, the questions in the link given below. You can check it from there. Alright guys, that was all about this particular video. मिलते हैं आपसे next video में. तब तक see you. Have a good day. Bye bye. Take care and sayonara.